जब लैला मजनू अपने आप में, लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में एक कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिकनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने लगा झरोखे के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका मजनू, हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी हैं जो राज दरबार की हैं, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उन्होंने एक को देखा, देखने के बाद था इसमें लैला तो कोई है नहीं, तो लैला नहीं है तो मैं इनको लेके क्या करूंगा। फिर तुम्हारे मन में कालापन और महंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ, सफेद कपड़े और महंगे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने हुए, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी, उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त कर लोगे। जो गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे। तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप पुण्य जागृत हो जाएगी। कितनी साधने करोगे, कहां तक साधने करोगे, समय तुम्हारे पास बहुत कम है। ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झुलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए। और ऐसा तुम में हो, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। Laila Majnu were great lovers. Laila was very dark complexioned and could see with only one eye. Her second eye was squinted. She was also very short and was not at all beautiful. But Majnu fell in love with her, and he became so mad in her love that he tore his own clothes, started ripping apart his flesh with nails, and remained standing near her house, waiting to have a glimpse of her through a window. The king, the father of Laila, had Majnu brought before him. He said, "Majnu, we have had to face a lot of social disgrace, all because of you. Before you, there are 25 most beautiful women of this kingdom. Choose any one of them and forget Laila." Majnu looked carefully at each of the women and then said, "Laila is not here among them. When she is not there, what shall I do with them?" This is the stage you have to reach, and when you do so, it won't matter if the Guru is wearing white clothes or ochre robes. A divine image of the Guru shall always remain before your eyes, and you shall attain divine bliss. Then you shall see the image of the Guru even when your eyes are closed or open. On reaching this stage, you shall yourself attain the state of a Guru, and you shall then be called Brahma Rudra. This process shall elevate your spiritual life to empyrean heights, and your Kundalini shall get activated all by itself. How many sadhanas can you do? You have so little time and so much to achieve. This is a straight way, but to follow it, there should be a deep longing and tears of joy in your eyes. You should be fully devoted, and there should be a determination to achieve everything by sacrificing all you possess. I hope you achieve all this. I bless you from the core of my heart. योगियों ने और साधुओं ने एक सौ से एक ही बात कही है कि जीवन को अगर समझना है तो बुद्धि पक्ष से नहीं समझा जा सकता, और जब बुद्धि पक्ष समाप्त होगा और जहां पर बुद्धि पक्ष समाप्त होगा वहीं से भावना पक्ष या श्रद्धा पक्ष प्रारंभ होगा। मीरा की अभिन्न सहेली ललिता थी, और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े, जबकि राधा को एक भी जन्म नहीं देना पड़ा। राधा और ललिता दोनों अभिन्न सहेलियां,
दोनों कृष्ण की अत्यंत प्रिय, दोनों को समान रूप से कृष्ण प्रिय हैं, दोनों को समान रूप से प्रेम की वर्षा कृष्ण कर रहे हैं। मगर क्या कारण था कि राधा उसी जीवन में पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो गई और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े। और इसका मूल कारण यह था कि राधा का सारा अहम गल गया था, समाप्त हो गया था। उसके मन में तो एक ही बात थी कि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर मुझसे प्रेम करते तो केवल मुझसे ही प्रेम करते। हो सकता है उनके चारों तरफ गोपियां सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर राधाएं सैकड़ों नहीं हो सकती। राधा तो केवल मैं हूं, मैं ही रहूंगी। और यदि वे राधा को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो फिर मुझसे ही प्रेम करते हैं। दूसरे संसार में सैकड़ों उनके पास आती भी है या जाती भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कोई कहता भी तो राधा कहती है कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण दूसरों के सामने देख तो सकते हैं, दूसरों के हृदय में नहीं उतर सकते। और इसका कारण था कि राधा ने अपना सारा अहम गला दिया था, अपना सारा अहंकार समाप्त कर दिया था। और अहम को गलाने की क्रिया, अहम को समाप्त करने की क्रिया बुद्धि पक्ष को समाप्त करने की क्रिया है। मगर ललिता के मन में अहम था। यद्यपि वो राधा की अभिन्न सहेली थी, यद्यपि बचपन से राधा के साथ तो जीवन व्यतीत किया, यद्यपि जहां जहां भी राधा गई वहां ललिता गई, मगर ललिता के मन में हर समय बुद्धि पक्ष पूरी रहा था कि कृष्ण शायद राधा को ज्यादा प्यार करते हैं, कृष्ण राधा के ज्यादा निकट है, कृष्ण राधा को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो राधा को अपने पास ज्यादा खींचते हैं, मुझे कम खींचते हैं। और यह बुद्धि पक्ष ललिता को पूर्ण रूप से उसके हृदय को उजागर नहीं कर पाया। ललिता पूर्ण रूप से अंदर जा नहीं पाई और ललिता को दूसरा जन्म लेना पड़ा, तीसरा जन्म लेना पड़ा, चौथा जन्म लेना पड़ा और 25वें जन्म में वो मीरा बनी। और जब मीरा बनी और मीरा बनकर के जब उसका सारा अहम समाप्त हो गया, सारा बुद्धि पक्ष समाप्त हो गया, जब उसने एक ही बात कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, मैं दूसरा समझता ही, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल एक ही आराध्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल उसको जानती हूँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं दूसरे पति को जानती भी नहीं, दूसरे आदमी को नहीं जानती। संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, केवल एक ही पुरुष है और उसका नाम श्री कृष्ण है। इतना अहम को गला दिया और अहम को गला दिया और मीरा पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त हो गई, पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में चली गई, पूर्ण रूप से अपने आप में चेतनी हो गई, या जिसको मुक्ति कहते हैं, या जिसको मोक्ष कहते हैं, या जिसको ब्रह्म से साक्षात्कार करने की क्रिया कहते हैं, वो हो गई। मैंने ये उदाहरण जानबूझ के आपके सामने रखा, जानबूझ के इसलिए रखा कि एक जीवन में ही आदमी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है ज्ञान के द्वारा। और यदि उसमें अहम थोड़ा सा बच जाता है, उसको आगे 25 जन्म लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो अहम 2 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 3 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 20 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 25 जन्मों के बाद समाप्त हो। और राधा ने एक जन्म में ही, एक जीवन में ही अपने अहम को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व में लीन हो गई, पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप में खो गई। क्योंकि जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, वहां चैतन्य अवस्था नहीं है, वहां आनंद की अनुभूति भी नहीं है, वहां आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई पद्धति नहीं है, वहां कोई चेतना नहीं है, वहां कोई प्रस्फुटन नहीं है। All the yogis and ascetics have emphasized on only one fact, that the essence of life cannot be realized with the help of the rational mind. And where the extent of the brain ends, that of the heart begins. Lalita was a close friend of Radha. She had to take birth 25 times in order to achieve what Radha did in her very first birth. Radha and Lalita both loved Krishna, and Krishna too was showering both of them equally with his divine love. Then what was the reason that Radha attained salvation in that very life, while Lalita had to take birth 25 times? The main reason behind this was that the ego of Radha had been humbled. She believed that Krishna could not love anyone else other than her. She thought that if Krishna loved her, then he loved only her and no one else, and that
It did not matter if he always remained surrounded by so many gopis, because Radha was only one, there could not be several Radhas. Krishna could look at others but could never form an image of someone else in his heart. This was because Radha had subdued her ego and had lost herself in her love. This process of losing one's ego, one's false pride, is the way to stop the brain from useless arguments. Lalita was egoistic. Although she was a good friend of Radha, she had spent her childhood with Radha and she went wherever Radha would go, but Lalita's rational mind always forced her to think, perhaps Krishna loves Radha more. Krishna is closer to Radha. He likes her more than he likes me. When he plays his flute, he does so to captivate Radha and not me, and so on. And this logical mind of Lalita did not allow the feelings of her heart, her love, to come out in the clear. Lalita could not realize the essence of life, and hence she was born again and again and again. And then, in her 25th birth, she became famous as Meera. On being born as Meera, all her ego, her vanity was vanquished. Her logic was subdued, and she said, Giridhar Gopal, Lord Krishna, is my only love. I know no one else. I have only one God, one thought, one perception. I know only one, and that is Krishna, who wears a crown of peacock feathers and is my only companion. I know only Krishna. In the whole world, there is no other man. There is only one man, and he is Krishna. She completely wiped out her ego, and on achieving this, she became fully devoted and went into a state of dhyan, meditation, thus attaining salvation. Her soul fused with the divine, and she attained the state called salvation and the state called realization of Brahma. I have deliberately taken this example here to make it clear that a person can achieve the realization of Brahma in one single life through dhyan. If there remains even some ego in a person, then he has to take birth again and again. This ego may be subdued after 2 births, or maybe after 3 births. Maybe it could take another 20 births. Radha achieved this state in only 1 birth and fused her soul fully with Brahma. She lost her identity in the love of Krishna and became one with him. Thus, where there is ego, there is no Brahma, there is no divinity, and there cannot be true joy. जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए। वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है। ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है। यहाँ तुम्हारा हापुड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी में बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो कुर्सी बैठा, तो हाथ डाल चित्र दिखा। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो, मेरे 12 बज गए, फिर तुम 4 बजे आ जाना। तो नहीं गुरुजी 1-2 मिनट और लगेंगे। फिर निकला, फिर डाला। सर क्या कर रहा है? उस दिखता भले घर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान कई रूपों में आते। मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है, गुरु ही। मेरे तो हजारों रूप है। तो उसे यूं करके उनको देखता रहा। तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? तो नहीं गुरुजी हिंदू, पक्का हिंदू। हिंदू तो है,
मैंने कहा तुम कुछ बात करनी? हाँ गुरुजी, एक सेकंड। निकला तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने से छूट के सादा से आया? कहाँ रहता है? कैसा? मैं रायपुर में रहता हूँ। तो मैं रायपुर में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, या तो आगरा में या सादरा में, तो तुम रायपुर में कैसे आया? क्योंकि आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटली भी गड़बड़ करी या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कह नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं क्या तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसे सुनूंगा? गुरुजी क्या है कि आपको क्या बताऊं गुरुजी? मतलब कुछ बात कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? तो फिर नहीं करा दिया कि गुरुजी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तो कह दे, आप बुरा नहीं मानेंगे? तो काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा तुम। ये बात है तुमसे मजबूत हो क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं गुरुजी, मगर मैं आपको कह देता हूँ, 15 मिनट हो गए, कह दूंगा कह दूंगा। आपने कोई प्रेम नहीं किया गुरुजी किसी से? ऐसा से पहली बार आया ऐसा पूछने के, सीधा गुरुजी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन पूरा किया है, बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत करो गुरुजी। मैं जो पूछ रहा हूँ कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल दो टूक होता हूँ वैसे। मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा हाँ कैसा, तुम क्या पूछना चाहते? नहीं आप दो टूक शर्माइए मत, सच्चाई हो, मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ। आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी प्रेम किया? तो मैं क्या के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठेका है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, नहीं किया होगा, कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा। मैं तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरुजी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी ही प्रेमी का दिल जान सकता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। तो मैंने कहा दर्द बोल, पहले दर्द क्या है, कितना दर्द? इतना है, कुछ मालूम पड़े कितने मैंने इतना सा दर्द लिया होगा जिंदगी में, तो साहब इतना दर्द भोग रहा होगा। अब मालूम नहीं तेरे दर्द तक मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, मगर क्या नहीं आप ये पहले ये बताइए कि मैं अपनी समस्या बताऊं। तो मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं, कि करते होता सिर से पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या थाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहा है? कि कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ जी। ठीक है ईसा मसीह का फोटो हो गया इसके पास। तो गुरुजी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरुजी, ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं, वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं, इसमें तो फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है? नहीं आप मजाक में समझिए गुरुजी, प्लीज आप मजाक में समझिए, मजाक समझ ही नहीं रहा। मैंने जिंदगी में गुरुजी प्रेम किया, लेकिन तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या? क्या आप पुष्पा को जानते हैं? मैं जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूँ उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है, और जो पुष्पा को नदी का नाम भी नहीं, गंगा होता तो नदी का नाम, गंगा को आप गंगा जानते हो? तो मैं कहता हाँ गंगा द्वार में, कोई यमुना को कहते यमुना जानते, भाई यमुना वहां, पुष्पा तो पुष्प तो है क्या? नहीं पुष्प नहीं गुरुजी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो मैं क्या तू मुझे प्यार करता मैं कैसे पहचानूंगा भैया? तो रहता कहाँ है? मैं हापुड़ में रहता हूँ, मैं तो हापुड़ में आया नहीं, ये तो गड़बड़ है गुरुजी। आप आते मैं दिखा था आपको गुरुजी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वही खड़े रहते, उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरुजी, मैं आपको बताता हूँ। तो हिल करके चोरी यहाँ तक आ गया गुरुजी। अब तो क्या है गुरुजी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था, वो कभी बोली नहीं जिंदगी में, आज तो बोली नहीं गुरुजी मुझसे, मैं ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरुजी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरुजी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ऐसा कुछ आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पढ़ी है। ये फोटो आप देखिए, मुझे फोटो दिखाई दिखा के फिर हमने आंखों से लगाया। भाई
अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत हुई नहीं, गलत हुई है बातचीत। सबसे बात करती, मुझसे बात नहीं करती, रहती मेरे पड़ोस में, सामने रहती। आप हाँ भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। इंजीनियर से आधा घंटे हो गया, दिमाग खराब होते होते, तो ये सारा दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी है कि उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता। ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं हो तो वो बोले नहीं तो लाके, मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना हुआ और कुछ ढूंढ के नीचे बेहोश धड़ाम, कुछ ढूंढ के अलग खुद गिर गए। नाटक है। अब देखिए तुम मुंह से झाग आ रहे हो, सारा पागल, मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुर्सी हिली, पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? मैं हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। कौन सी पुष्पा? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा अभी तक, इसकी जेब में फोटो है, इसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था इतना सा, बिल्कुल दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। निकाला, 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे धड़कता रहेगा, कोई जरूर नहीं शायद इसी से पेश में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया सारा, उसको जूता सुंगाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं है। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आप लोग, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लाया, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे, शिष्य को बुलाया, मैंने कहा भाई ये अब शिष्य कैसे बताऊं मैं क्या? मैंने कहा भाई बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया। गुरु जी आप 12 बजे मत मिला करिए। मतलब नहीं मिलेंगे, आइंदा से ध्यान रखेंगे, 12 बजे जो आते हैं कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहले वो देखा नहीं कि 12 बजे दिमाग खराब होता है, घर में देखा नहीं, इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाकर होश आया उसको, होश आती पुष्पा पुष्पा बस चलो मेरा चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरुजी आप बताओ आप क्या करें? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए पैदा हूँ। चलो वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है उदाहरण दिया आपको। ये संबंध होते हैं, और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। एक दीवानगी, अपने आप में एकदम से अटैचमेंट, उसके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी स्टेज, जब ऐसी स्टेज आती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे प्राणों में स्थापित है। जब वो प्राणों में स्थापित है तो अपने पूरे चैतन्यता के साथ स्थापित है। मैं अगर तुम बहुत गरीब हो और किसी करोड़पति की गोद में चले जाओ, मतलब गोद ले ले, वसीयत में गोद ले ले, तो उस बात उसके पास करोड़ रुपए वो तुम्हारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ा। तुम तो गरीब थे, मगर चूंकि तुम गोद गए उस करोड़पति के, तुम्हें कुछ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शिष्य परिषद या गुरु परिषद या दूसरे दुर्गा सप्तशती या पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो ही गुरु को अपने प्राणों में स्थापित किए तो गुरु का जितना ज्ञान, जितनी चेतना, जितने मंत्र जाप, वो सब तुम्हें अपने आप समाहित हो जाएंगे, फिर तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक रास्ता है, वो रास्ता भी है जो माला जपने का है, ये रास्ता भी है। इस रास्ते में तुम्हारा शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु से लीन हो जाने की क्रिया, शिष्य बनने की क्रिया। और ऐसी स्टेज में तुम कुछ नहीं हो, केवल एक चिंतन है कि वह गुरु, जो भी तुम्हारा गुरु। अब इसमें कोई स्वार्थ नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं कहा तुम गुरु को 5 करोड़ रुपए लाके दो, मगर तुम्हें त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवम समर्पयेत्, ये सब कुछ जीवन तुम्हारा है। जब मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मेरा धन दौलत ऐश भोग आराम, वो सब कुछ तुम्हारा है। त्वदीयम वस्तु को आपने मुझे दिया है, तुभ्यमेवम समर्पयेत्, आपको मैं समर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मेरा झूठ, मेरा छल, मेरा कपट, मेरी कमियां, मेरी न्यूनताएं, मेरे गृहस्थ की समस्याएं, वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं कि वो भी आप उसको ठीक करें। और गुरु जब ये स्टेज आएगी तो गुरु आपकी समस्याओं को अपने आप अपने सिर पर लेकर ठीक करेगा ही, वो नहीं है फिर तो उसमें तो दूर आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज आने की क्रिया होती है, ये स्टेज आने की क्रिया प्राणोत्थान क्रिया कहलाती है। The deepest love is between two lovers. The same close bond must exist between a guru and a disciple, between a devotee and God. If one of the two has promised to meet at 3 o'clock and does not turn up, then the other should feel uneasy, worried, and impatient.
It was about 7 to 8 years back that I was sitting in my house at Jodhpur. It was midsummer and very hot. A young man about 23 to 24 years old from Hapur came to meet me. He was handsome and well dressed. He came to me and said, "May I sit down?" I asked him to do so. He sat down on a chair and took out a photograph from his pocket. He said to me, "I want to say something." "Be quick," I said. "It is already 12 in the noon and it would be better if you come back at 4 in the evening." "No, please, Guruji. It shall take only a few minutes." And saying these words, he again took out the photograph, looked at it, and placed it back in his pocket. I said to myself, what is he trying to do? He seems to be from a well-to-do family. But why is he acting so strangely? Just as God appears in several forms before common folks, similarly, in my life, disciples have turned up in different varied guises. In your life, there may be only one God, the Guru. But in my life, I have seen so many epithets of him in the form of my disciples. I asked him, "Are you a Christian?" "No, Guruji," he said, "I am a Hindu." "Well, fine, you are a Hindu. But what do you want to say to me?" "Guruji, just 1 second," he said, and again took out the photograph, looked at it, and replaced it. "Have you escaped from a mental asylum in Shadara?" "Where are you from?" I asked him. "I live in Hapur, Guruji." "But there is no mental asylum in Hapur. There are asylums in Agra and Shadara. Then how come you are from Hapur?" "Guruji, you think I am mad?" I said, "Well, the way you are behaving, anyone will think that you are mentally disbalanced and have escaped from an asylum." "No, Guruji, this is not true. Please listen to what I have to say." "How can I, when you don't tell me anything?" "Well, Guruji, the thing is that—" "Guruji, please, don't be offended. I want to tell you something." It had become too much, but I controlled myself and said, "Speak up. Don't hesitate." "Guruji, I just hope you won't feel offended." "Come on now. Why shall I feel offended? If you abuse me, I shall at the most slap you, but I shall not be offended. I shall just slap you, that's all. You may be young, but I am in every way stronger than you." "Guruji, that does not matter." "Okay, let me tell you everything. You have already wasted 15 minutes. I said with mock anger. "Have you ever loved anyone, Guruji? Anyone? Anytime?" I said, "You are the first disciple who is asking such a question. Nevertheless, let me tell you, I have loved my Gurus and all the gods." "This is not what I am talking about, Guruji," he said. "I am asking you something quite different. You are not able to get what I am saying." Again he took out the photo. I got a hint what he was talking about. Still I said, "What do you want to tell me?" He said, "Please tell me clearly, Guruji. Don't hesitate or feel shy. I won't tell anybody. Your secret shall remain safe with me. Have you ever loved anyone?" "Why should I tell you?" I said to him, "I am not bound to tell anything to you. Life is so long, I may or may not have loved someone. But why do you ask?" "Guruji, I am asking you because only a lover can realize the plight of another. You can't understand, Guruji.
You don't know what love is, and you can't know. I said to him, forget about me. Tell me how deep is your pain. I may have experienced only slight pain in my life, and God knows how big your pain is. I am not even sure if I can reach the depth of your pain. No, Guruji, he said, first reply to my question so that I can present my problem before you. Well, if you insist, I have never loved anyone the way you have. If I had, my disciples would have sent me to prison. I have never done any such thing. Now tell me what you want to say. Guruji, I am in love with someone. I said, well, this is nothing new. All Indians have only one motive in life, to love. And when they fail in love, they come to their gurus, which is the second stage. You have just entered this second stage. Guruji, please don't make fun of me. I am not at all making fun, I said. Guruji, I have fallen in love. I said, you have achieved a great accomplishment indeed, which no one else could have done. But you did it, and the whole of India, rather the whole world feels proud of you. So what? Guruji, do you know Pushpa? I said, as far as I remember, there is no one named Pushpa living anywhere in my neighborhood. Pushpa is also not the name of any river. If you had said Ganga, then I would have told you that Ganga is a river flowing through Haridwar. If you had said Yamuna, I would have told you that it is in Delhi. Pushpa means a flower. But Pushpa, I don't know anything about this name. Not Pushpa, Guruji, Pushpa. I am talking about Pushpa. Well, I don't know any Pushpa. If you want to tell me something about her, go on. Guruji, Pushpa is the girl whom I love. If you come with me to Hapur, I shall show where she lives, and on seeing her, you won't move from the place. You shall go on seeing her, and you won't be able to leave Hapur. But if this is so, how come you are here? I said to him, well, Guruji, I love her so much. I keep staring at her daily, but she has never even spoken to me. I keep looking at her, but she does not care a bit about me. Guruji, please do something. Use your yantras and mantras and make her come and say to me that she loves me. I have heard that you know how to use yantras and mantras. I have also read your books and the magazine you bring out. Guruji, just look at this photograph. Saying this, he took out the photo once again and touched it to his eyes. You must have talked to her, I said, without looking at the photo. Guruji, this is the problem, that she has never talked to me, he said. She lives in my neighborhood, just next to my house, but she does not talk to me. Please, Guruji, promise that you shall help in our union. I said to myself, half an hour has been wasted in his gibberish talks. This is quite common in love and is nothing new. He is just another lover in the category of Laila Majnu and Romeo Juliet. To him I said, look, I cannot help you in meeting her. I have not opened a bureau to do such work. And I had hardly spoken these words when he fell down unconscious from his chair. I thought that he was fainting, but when I stooped to look at him, I saw him frothing from the mouth. I said to myself, what a fool he is! He shall create trouble for everyone. I sprinkled some water on his face
but nothing happened. My wife, who had probably heard the crashing of the chair, came running and said, "What happened?" I said, "Well, nothing has happened. Pushpa has not come, hence he..." She looked inquiringly at me. "Who is Pushpa?" she asked. I said, "He has a photo of her in his pocket. I have not even seen it." I took out the photograph from his pocket. It was a photo of a girl taken from quite a distance. I put it back into his breast pocket lest his heartbeat stopped. I thought that it would be better if the photograph remained near his heart, for then it would keep beating. Maybe it worked as a pacemaker for him. 1 hour passed. We tried everything, made him smell a shoe, put some chili powder into his nostrils, but nothing happened and he remained unconscious. I was worried that it might turn into a police case and the police might believe that I had done something to him, or that he became unconscious because I gave him something to drink. I took him outside to the terrace, which was cooler, and called my disciples. I told them that he had become unconscious due to the oppressive summer heat. One of the disciples said, "Guruji, from now on, please don't meet anyone after 1 o'clock in the noon." I said, "Fine, I shall take care in future." But how could I know that he would experience an attack of insanity after 12 o'clock? Around 4 o'clock in the evening, he regained consciousness, and as soon as he opened his eyes, he cried out, "Pushpa! Pushpa!" In a few moments, he got up, and I said to him, "Don't worry, you are fine." "No, Guruji, first tell me, what will you do for me?" I said, "Don't worry, I will help you. I am here only to help you." I was afraid lest he again went into a swoon. Hence I said, "I shall myself accompany you to Hapur. I shall myself bring her before you. Don't you worry, just get well soon." I have narrated this incident to tell you what actually is the relation between two lovers like. And if you form such a bond with God, you shall become great like Meera, Kabir, Sur, Raidas, and you shall achieve divine enlightenment. If you develop such closeness to the Guru, then the Guru shall always be present in your soul, guiding you and teaching you. This attachment is like an ecstasy, and when such a stage is achieved, then the Guru establishes himself in the conscience of the disciple, and thus all the divinity of the Guru gets transferred into the disciple. If you are poor and a millionaire adopts you, then all his wealth becomes your own and you won't have to earn anything. Similarly, in this stage, the divine powers of the Guru get instilled into the disciple. Then you won't have to chant mantras, you won't have to read the Guru Upanishad or Shishyopanishad. As soon as the divine form of the Guru gets established into your soul, then all the knowledge, enlightenment and ethereal powers of the Guru shall be transferred into you. Rather, you shall become a part of them. Then there shall remain no need to accomplish sadhanas. Love of Guru and sadhana are two ways to reach the same goal. In the first way, you shall have to become a disciple. Disciple means to become one with the body and soul of the Guru. In this stage, you are nothing. There is only one thought, and that is of the Guru. Giving up everything to the Guru does not
in any way reflect any selfishness on his part. I have never asked you to give me money. Your aim should be Twadeeyam Vastu Tubyamevam Samarpayeth. My life and everything I possess in it, wealth, pleasures, fame, family, happiness, all belong to you. You have given everything to me, and I offer all of it back in your feet. Along with this, I give up all my lies, deceit, problems, sorrows to you, and I pray to you to vanquish them. And when you reach this stage, the Guru shall himself take the responsibility of your problems and shall solve them completely. Then there shall remain no shortcomings in your life. The process of reaching this stage is called Pranottan Kriya.